for coming in so many numbers. वो विषय असोच दवरिल्लो की लोकांक म्हणटकर तुगेली स्क्रिप्ट कोण दुसऱ्यान बी बरयला काय म्हणून. आणि दुसरे तुम्ही लार्ज नंबरान येवपा इज मोपी पब्लिसिटी. मोपील पळय पब्लिसिटी पळय आसा ती भयंकर चड जाल्या आनी ताका लागून म्हाका टेन्शन आयलें. म्हणल्यार ताका हांवें स्लायड प्रेजेंटेशन केलां. कित्याक म्हणलें इतली पब्लिसिटी लागून चड लोक येतले आनी मागीर म्हणटले अरे वो कांयच उलयलो ना म्हणून. ह्या विशयाचेर आय एम नॉट ए लर्नेड पर्सन. आय एम ओनली ए प्री लर्नर. दत्त सदां सांगतालो म्हाका कितें एक विशयाचेर उलय रे तूं आनी चड करून दत्तालो म्हणा की हांवें एक लॉ विशयाचेर उलोवपाचें. आनी लॉ विशयाक आनी म्हज्या काय तज्ञ आनी क्लियोफात आसा म्हणून म्हाका भंय दिसता ताजेर उलोवपाक ह्या ऑडियन्सा भितर. म्हणून हांवें असो एक विशय काडलो की ताका लागून म्हाकाय वाचपाक पडटलें आनीक ते खातीर. आनी हें प्रेजेंटेशन पळय आसा तें अशें तकल्यान घेवन केलां हांवें की इट इज टार्गेट सेगमेंट असो घेतलो हांवें की 20 ते 40 वर्साचे भुरगे तांचे एक एटिट्यूड फॉर्मेशन जावचें म्हणून. सो हांव चड अशें इंटेलेक्च्युअल मास्टरबेशनाक वचना हातूंत भितर. म्हणटकीर व्हडली काय इंटेलेक्च्युअल अशें सांगपा म्हणना हांव. बट आय एम जस्ट ट्रेसिंग and trying to come to the conclusion that God can never die. चड अशी म्हजी प्रेजेंटेशन पळय आसा तें उलोवप कमी आसतलें बिकॉज देर आर व्हिडिओज पळय आसा. कन्क्लुजन पयलीं सांगता. हें गेलें काय कितें मायक. कन्क्लुजन पयलीं सांगता की फायनली आफ्टर माय रिडींग आनी जें हांव पळय वाचलां ताच्या लास्ट स्लायड केल्या कितें वाचलां आनी वॉट इज द बेजीस ऑन वीच आय एम टॉकिंग. Final, I feel I would like to come to this conclusion. Important point that I want there is that that God cannot survive without human life, but human life can survive without God. But that is what I try to want to hint here. And the second point that I want to hint is it's finally a cocktail. I mean, God never dies पे म्हणतात. तातूंत भितर फायनली रियलिझम कमी आसा. पण ते हांव पयलीं सांगपाक सोदना कित्याक पयलीं सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता हांगा ऑडियन्साक कोण नासनाशिल्लें. सो इट्स ए कॉकटेल एक्चुअली. हे टॉक आय वूड लायक टू डेडिकेट इट टू दीस पीपल हू आर विक्टिम्स ऑफ गॉड एंड रिलीजन. दीस इज ओनली वन इन्सिडेंट आनी अशे असंख्य इन्सिडेंट आसात. सो लेट्स डेडिकेट द टॉक टू दीस पीपल. लेट्स डेडिकेट द टॉक इन द ऑनर ऑफ दिस गर्ल, courageous girl, who is aspiring to be the Prime Minister of Pakistan through a democratic process. And Sadhyak is into education and she has been the victim of Taliban fanaticism. Anyway, contrast म्हणतो करपाक जाय टॉकाक. नाल्यार तूं भितर ज्यूस ना न्ही कॉन्ट्रास्ट करना जाल्यार. So there was a movement that God is dead somewhere in 1883. म्हाका ते सारकी प्रोनाउन्स करपाक येना. फ्रेडरिच नीचे. He is a German philosopher. He started a very powerful movement, The God is Dead. खूब जाण डिस्टर्ब जाले ताका लागून. And finally, God pronounced him dead in 1900. Yeah. So let's come to the topic. God never dies. ही स्लाइड पळयली तर कळटा की देव म्हणटा केन्ना मरपाक शकना. न्ही असंख्य लोक पळय. अर्नाब पळय आसा टायम्स नांवाचेर आनीक राजदीप. He cannot draw crowds. पण बाकी सगळे टीव्ही चॅनल पळय आसा तर ऑन संस्कार आनी गॉड एंड रिलीजन दे ड्रॉ ह्यूज क्राउड्स. वती क्राउड्स पळय वेदर इट इज इस्लामिक फेथ ऑर सिख फेथ ऑर हिंदू फेथ, यू नो द crowds are increasing. But the pilgrims die. So that's a different issue altogether. God can never die. The pilgrims can die due to various reasons. And you find, see, जशी आमची आवयो जर तर हेच भशेन आसल्यो, निरुपा रॉया भशेन आसल्यो, देव केन्नाय घरा मरपाक शकना. इतली फेथ आसा देवाचेर की एक भुरगो तर शेणलो न्ही, आमी फिल्मां पळयता पळय, शेणलो भुरगो आनीक 30 वर्सान परतो मेळटा पळय, आनी ती देवाची फेथ आसा इतली. सो चड अशी आमची आवय अशी न्ही घरांनी. सो घरान देव कसो मरतलो. आनी आतां भुरगीं पसून तशी पळय. एजामी बरे मार्क पडपा खातीर देवा म्हऱ्या वचपाचें, लव अफेरा खातीर देवा म्हऱ्या वचपाचें. यंग मॅन पसून अशें पळय देवा कडेन तापतात न्ही. आमची मदीं दिस इज ओन्ली ए रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल. या
आमचे मदीं यंग ब्लड असता, एंग्री यंग ब्लड, दे ऑल्सो हॅव फेथ इन गॉड न्ही मागडे. दिस क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर डायलॉग तो आनी हांव वाचना. म्हजी टॉक पळय आसा ते हांव 5 पार्टांनी उलयतलो, 5 पार्ट्स. पयली पार्ट सांगता तुमकां सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायंग टू से. 5 पार्ट म्हणल्यार चड लेंथी अशें न्ही तें. ओके, जस्ट आय हॅव मेड देम 5 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन्स. म्हळ्यार वाचतकर म्हजे तकल्यान जी पळय क्वेश्चन्स पळय आयलीं, नाल्यार जेन्ना हांवें सांगलें ह्या विशयाचेर हांव उलयतलो, then lot of questions came to my mind for which I have found answers, but I am not going to give those answers because you should find your own answers to these questions. Questions itself, answers are hidden there, so it is for you to find that hidden answer. The second part is the search for God, and general observations from how the search has taken place from the stage of hunting, to the stage of city states and to the stage of civilized life that we call today. How we are trying to search for this thing called as God and how we are describing God in different ways. The third part is love me not. न्ही, खूप जाण चली पळयना तुमी अशी फूल घेवन आसतात पळय, एक पाकळी काडटात, लव मी नॉट. म्हळ्यार गॉड एक्झिस्ट, गॉड डजंट एक्झिस्ट, गॉड एक्झिस्ट, गॉड डजंट एक्झिस्ट. सो दॅट इज द third part. And the fourth part is a little peep into my mind. And I'm not going to open the door of my mind. I'm only going to open one keyhole to tell you what is in my mind. And the last part is the reference work that I have done. Okay? Yeah. So let's come to the first part, questions. Now, थोडी questions पळय आसा ही म्हणजे सिनियर लोक पळय आसा तांकां ही मातशी चायल्डिश अशी दिसतली. But these questions linger on. And even if the senior people start thinking on them and they will say, oh, this is also a question in my mind, पण असली question करप न्ही आमी, because we have to accept God in silence. We have to discover things through reason. We have to go ahead with science through data and proof. But when God is concerned and religion is concerned, we have to only maintain silence. We should not question it. But still the questions come. One of the question is this. देव ही बरी संकल्पना, ब्युटिफुल. तातूंतल्यान आमी तो धर्म तर काडलो, कित्याक देव तर एक, वन सुप्रीम बींग, मोनोथेइझम. एकच बींग म्हणटा आमी न्ही, मागीर ताचे आयडल्स खूब आसूं. सो देव तर एक आनी तातूंतल्यान जर धर्म तर काडलो, तर आम्ही स्पिरिच्युअलिझमाच्या मार्गार पावपाक शकतात काय, हो एक म्हाका प्रश्न. आन्सर हांव सांगना, आन्सर म्हाका मेळ्ळा, बट इट इज फॉर यू टू थिंक एज आय प्रोसीड फॉरवर्ड. म्हणल्यार धर्म काडलो जाल्यार देव कसो उरतलो, लायक समथींग लायक दॅट. बट एनीवे, पूण देव तर एक, इतली धर्म कित्याक तर, फायनली देव एक न्ही. देव म्हणटा ती बरी संकल्पना, पण God cannot be proved. Now, some people say you cannot disprove also, but disproof is not a proof. Proof is a proof, it is direct, it is not indirect. So, religion is a good thing, Ishtarya. I'm just arguing with myself. पहिले हांवें म्हणिल्लें कितें, religion नाका. आतां I'm arguing with myself. Religion is a good thing, because religion is a set of morals. अशें धरया. Minus rituals. Religion is a set of morals. Like Albert Einstein had said that that science purifies religion. This is a relation between science and religion. आणि म्हणलें ताणें म्हणलें म्हण हें खरें अशें न्ही, पूण तो व्हडलो मनीस न्ही. सो समटायम्स व्हडली मनशां ती कोट करची पडटा, सारकी पसून पटना जाल्यार पसून. सो Albert Einstein said science purifies religion. ताजेर मागीर येतलो. So if we can keep religion minus God, because God is something which is not scientific. Actually, I am trying to give a scientific color to an unscientific statement that God never dies. So if we, religion म्हणटी बरी वस्त, it is a set of morals. बरे मार्गार व्हरता आमकां. So तातूंतल्यान देव तर काडलो, then can we elevate religion to a social science?
काय स्पिरिच्युअलिझम इज ए सर्च विदाउट द क्रचेस ऑफ रिलीजन अँड गॉड. दोन्ही नाकात. सामकी स्पिरिच्युअलिझम कडेन या, तें बरें सगळ्यांचें काय. धर्मा लागून खूब झगडी जातात, आनी धर्मा लागून फक्त झगडीन जाल्यात आनी अजुनूय जायत आसात, मुखारय जायत उरतली, बिकॉज फायनली इट इज ऑर्गनायज्ड रिलीजन. सो झगडीन ना जाल्यार मजा ना. फायनली धर्म म्हणजे झगडीच न्ही. कित्याक मुगेलो धर्म बरो नाल्यार मजा कसली. आय एम ए रिलिजियस पॅट्रियट. हांव म्हज्या धर्माचो पॅट्रियट न्ही. जसो हांव पॅट्रियट ऑफ द नेशन, आनी जशें आमकां कळ्ळें म्हणजे मुगे शीम म्हाका राखपा जाय देशाची, तशें म्हाका मुगे धर्मा शीम राखपा जाय न्ही. तातूंत भितर चड लोक येवपा जाय. कमी लोक जाता म्हणल्यार कितें, कन्वर्शन जाता म्हणल्यार कितें, वायट गोश्ट न्ही. सो धर्म म्हणल्यार झगडी करता. गॉड म्हणटा एक सायंटिफीक बेज ना. स्पिरिच्युअलिझम म्हणजे समथींग डिफरंट अशें काय. दॅट इज वॉट इज गोईंग ऑन इन माय मायंड. मे बी डिफरंट, मे नॉट बी डिफरंट. आनी विदाउट क्रचेस ऑफ रिलीजन इन गॉड गेले जाल्यार हांव स्पिरिच्युअल मार्गार पावतलो काय. कित्याक लागून हे रिलीजन इन गॉड म्हणटा ती दे आर पोल्युटींग एजंट्स काय ती एनहॅन्सिंग सबस्टन्सेस फॉर स्पिरिच्युअलिझम, or are they polluting agents? That's the question in my mind. Men, women and the universe may be wiped off, but God never. It's a key statement actually. This I have made the statement only because I said God never dies. Actually, it's the reverse is true. But this is a question weighing in my mind. That men, women and the universe may be wiped off because God created men, women and the universe. God is the creator. आणि कोण तयार केलं तर आमकां ते सायन्स बियन्स म्हणून डिस्कशन दवर. ते सायंटिस्ट बेश्टे थेरी करतात, ते मागीर चुकले म्हणून सांगतात. ते दे आर लायक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. नवो जज येता म्हणटा आपल्या पयलीं जजमेंट चुकलो म्हणून. सो सायंटिस्ट आर लायक सुप्रीम कोर्ट जजीस दर्या. सो मॅन वुमन इन द युनिवर्स मे बी वायड बट गॉड नेवर. अशें काय तें कितें मरपाक पयलीं आसपाक जाय न्ही. इफ देर इज लायफ देर इज डेथ. When there is no life, how there can be death? So God never dies म्हणल्यार कितें काय. असं काय देव काय ना काय. God itself is a false belief, God delusion. Because I am just carried away by that book by Richard Dawkins, The God Delusion. Is it a false belief? Questions are not over. आणि 1-2 मिनिटां सोंपतली. Yeah, now look at this question for instance. Look at this question, yeah. I would like to pause for at least 15 seconds. देव म्हणतो तो डिस्टिंग्विश करता काय बिलिव्हर्स आनी नॉन बिलिव्हर्सा भितर. तूं बिलिव्हर न्ही, सो हांव तुका सपोर्ट करना. तूं त्रासा पडटलो तूं बिलिव्हर न्ही जाल्यार. तुका जर कितें मेळपाक जाय, तुका त्रास जावपाक जायना, तुजें आरोग्य बरें उरपाक जाय, तुज्या हाताक पयसो खेळपाक जाय, तुगेले चलयेचे टायमार लग्न जावपाक जाय, आनी इफ यू डोंट बिलीव इन मी आय एम गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लेम फॉर यू. असो देव करता काय. डज इट डिस्टिंग्विश बिटवीन बिलिव्हर्स अँड नॉन बिलिव्हर्स. आन्सर यस आसा जाल्यार देन देव म्हणतो मनशा भशेन जालो. गॉड इज एज सेल्फिश अँड एज मीन एज मॅन. आन्सर यस असल्यार न्ही. म्हणजे देव म्हणतो व्हड न्ही सगळ्याचे काय. सगळ्याचे काय व्हड. देवाक असली लागना न्ही, असली बारीक गोष्टी लागना देवाक. बिकॉज इज अ परफेक्ट बिंग. परफेक्ट बिंगाक मनशा सारक्यो विकनेसच आसपाक शकना. वीक आमी, देव इज स्ट्रॉंग. तस जाल्यार देव कॅन नेवर से यस टू दिस. Whether you believe in me or whether you don't believe in me, I have created you, I love you. It has to be like that, न्ही. Answer has to be no. Answer can't be yes. But आमकां खूब जाणां दिसता की आन्सर इज यस म्हणून. अरे नाल्यार मुगे तें चुकतलें हांव देवाचो कोप, देवाचो राग. तस जाल्यार देव आमचे भशेन जालो. मागीर देवान परफेक्ट कित्याक म्हणटा तर आमी. नो तर आन्सर जालो, मागीर आमी हें सगळें कित्याक करता तर. नाका अशें झंझट. No. Whether I believe in God, I don't believe in God, God will always rescue me. Because God is great. Yeah. So God will never distinguish between believer and non-believer.
त्या खातीर तसले आमी वेस्ट कित्याक करता रे? इतले तांदूळ, इतली पेट्रोल, इतली तातूंत भितर घी, इतली दूध, इतली नाल्ल, प्लांट लायफ सॅक्रिफायस, एनिमल लायफ, फुलां, फुलकार, ह्युमन लायफ, भांगर, पैसे, हायवेज, ओपन स्पेसीस, जागो, खंय ओपन स्पेस आहा ती आयली घुमटी. सो देव जर बिलिव्हर आनी नॉन बिलिव्हर मध्ये डिस्टिंग्विश तर करना, तो हे झंझट कित्याक करता काय आमी? माय गॉड, युअर गॉड, आवर गॉड. म्हजो देव, तुझो देव, आमचो देव, आमचो म्हळ्यार आमचो फॅमिलीचो देव, बहुजन समाजाचो देव, सारस्वता देव, कळ्ळें कितें म्हणटें, आनी कोण देव, आनी कोणा देव, गोल्डस्मिथाचो देव, कळ्ळें म्हणटें, फिशरमॅना देव, आवर गॉड. आवर म्हणल्यार सगळ्यांक न्ही, आवर म्हणजे असली गोष्टीक एंट्री फॉर फ्यू, अमक्या जाग्यार बसून ताजे मुखार दुसऱ्या देव असली गोष्टीक ब्लेसिंग्स दिता काय खबर ना म्हाका. हांव जस्ट थिंकिंग दीत जातलें काय, नाल्यार सगळ्या कडेन अशी भरभराट कसो तर तो देवळाचो, देवाची ब्लेसिंग्स आसा दिसता असली गोष्टी. मागीर तो देव काय? Another question that comes to me is, do I have non-belief as an option? I don't want to believe in God. समजा, I decide केलं. But do I have that option? स्मिता बसून असते, किती पिशपण करतो काय म्हणटले, हे ऑप्शन तू घेनाका, तू भुरगें आसा, भुरग्यां फ्युचर आसा ना, आतां भुरग्यां दोनी लग्न जाली, नात्र आसात, तांगे फ्युचर आहा, तांगे एडमिशन मेळपा जाय बरी इश्कोलांनी, कॉलेज मागीर. सो डू आय हॅव नॉन बिलीफ एज एन ऑप्शन एट ऑल? कित्याक आमची तर फॅमिली तर पळयली, खूब जाण म्हणटात की ते एथेइस्ट पळय आसात ते म्हणटात की चायल्ड इज बॉर्न इन एथेइस्ट म्हणून अशें म्हणटात. बट दिस इज इन थेरी. प्रॅक्टिकल सायड, चायल्ड इज बॉर्न एज अ बिलिव्हर. प्रॅक्टिकल सायड, थेरी ओके. थेरी म्हणल्यार कितें, लोक जल्मांतल्यान खंय ताका धर्म आनी देव म्हण कितें कळटा, दॅट इज थेरिटिकल पळोवपाक. पूण फॅमिली भितर जल्म जातकर न्ही 26 दिसाक आनी केन्ना तो बर्थडे बी करतात तो 12 दीस, वॉट एवर इट इज, स्टार्ट न्ही ते फॅमिलीक ना करची ते. आय एम नॉट अगेन्स्ट दैट. व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल यू इज आय डोंट हॅव दॅट ऑप्शन. I don't have the option when I look at the family. इश्कोलाक गेल्यार तेच, एज्युकेशन सिस्टमाक तेच. कित्याक द नीड मीट, ताची गरज आसा आमकां म्हणून. गरज खूब कारणां खातीर आसतली, गरज आसा पूण गरज आसा हाजूर ते ट्रू अशें न्ही. इट मे बी द नीड, दॅट डजंट मीन that I have to believe that is the truth. So I don't have that option in the society. It becomes a very difficult because I have to turn the table. इजी ऑप्शन मेळना, जशें म्हाका बिलिफाचे ऑप्शन मेळटे. कळ्ळें कितें म्हणटें? सपोज हांवें घरा कडेन सांगलें हांव देवा दिव लावपाना, हे चूप, पिशपण करनाका, आनी कितें करतो, तुका बाकी सगळें करता म्हणून तुका शेनवार करपा जाय मरे, तो तुगे चुकयन तो रिलिजियसली वता तूं शेनवाराक, आनी हांगा दिव लावपा जायना एक दीस पूण देवाक, किती व्हडली चूक करता ती करून. आय डोंट हॅव दॅट ऑप्शन. So just as I have got an option to believe, I should have an option not to believe in a very free way, nice way, smiling way, which I don't have. Means I have got actually, but I'm talking for all of us. So this is a question also going on in my mind. 2 more questions and part 1 is over. But I'm Hinducher वाचली आहे. Religion starts where science ends. म्हणल्यार कितें, तुम्ही म्हणटात न्ही की रिलिजन म्हणल्यार सायंटिफिक न्ही म्हणून म्हणटात न्ही तुमी, तस जाल्यार अशें जी सायन्स सोंपता ती रिलिजन आनी देव सुरवात जाता. कित्याक सायन्स सगळें एक्सप्लेन करपाक शकना. सो हो एक प्रश्न विच तकलेन घुंवता, हें खरें काय? First of all, does science end? Is there an end of science? Or science never ends?
Science is continuous inquiry and continuous questioning and accepting something and rejecting it and then accepting something different. Does God and religion start and end with acceptance, silence and blind obedience? Ka hi khari goshti. Science does not end. But religion and God has an end. End only like that. The beginning is the end. End is not something different. See, they tell us it is like this, that's the beginning. And what is the end? It is like that. So, it is, or is it like that? Now, I am only a pre-learner, I am not learned. So, or is it like this? Does the circumference of God contract as science expands? If end of science is religion, जशी science expands जाता, तशी God and religion as a circumference contract zata. It should happen like that, no? Does every advancement in science prove religion and God? Because Einstein said that science purifies religion. Or is science God? Or is there a God of science also? की देवूच सायन्सा शिकयता तूं कितली पसून फुडें वचप म्हणटे आनी कितली फाटीं रावप आनी केन्ना खंय वचप म्हणटे. These are just questions, these are not answers. भिनाकात हे म्हाका पयलीं येवं जालें. अरे म्हणजे मायनिंग, कॅपिंग, एनवायरमेंटल डिजास्टर आनी म्हणजे रेकलेस ओवर मायनिंग ऑफ गॉड एंड रिलीजन पळय चल्लां. Is it sustainable for fragile social, political and scientific environment? कळ्ळें म्हणणे. सी तुम्ही हसतात म्हाका बरें दिसता हसतकर, पूण मागीर म्हाका दिसता न्हू की हांव जोक बी करता काय म्हणून. It's not a joke, very serious. See, religion and God has got an effect on social, political environment. Definitely. One Ram temple can ignite entire India. That's the power of Ram. One Ram temple can create blood throughout India. That's the power of religion. Kitlu pay, red power. Communism agade itlu power na pay. Military agade itlu power na. Peaceful power pay to. So is it sustainable for the fragile social, political and scientific environment? कित्याक आमचा scientific attitude आमकां advance करपाक जाय. आनी त्या खातीर शिक्षण म्हणटात आमी. शिक्षण म्हणल्यार कितें SSC जावपा खातीर न्ही. Thinking ability वाडोवपाची of the youth. So overmining of God everywhere, does it not come in the way and disturbing this environment? कळ्ळें तुका GMC गेलो बोवाळ पयलीं भायर. मागीर एक घुमटी आयली म्हणटकर दुसरी मागीर ती एक मॉस्क येवपा जाय. मॉस्क आयले म्हणटकर क्रॉस येवपाक जाय. तिगालोय बोवाळ ऑन द हेल्थ पीच. ना बरी गोष्ट त्यो. एवरी हायवे, एवरी लेन देर इज गॉड नाव. हावसिंग बोर्डाक रावत जाल्यार रावपाक गेले तेन्ना एकच आशिल्लें. आतां 7 आसात. कितलो प्युअर जाला आमचो हावसिंग बोर्ड खबर आसा तुमकां? प्रत्येक जाग्यार प्युअर जाला. सो डू वी नीड ए कॅपिंग गाय or are we waiting for the Supreme Court to ban mining of God? And this is the last question. Why God grinds the ignorant and why the criminals and wealthy rule the resting nests of God everywhere? खंयचे रेस्टिंग नेस्ट पळयात तुम्ही. रामनाथी पळयात, ते तिरुपती पळयात. न्ही तशें ना ते हांव फकाणान म्हणली ना जाता खूब त्रास जाता तेजे म्हाका. त्रास जाता, हांसूं येना म्हाका, राग येता, तिडक मारता. पूण हांसप म्हणल्यार एक तिडकच जावं. पार्ट 2 बरें दिसपाय तुमकां. पावलो म्हणून हो पार्ट 2 चड लागपा ना. सो पळया रोखडें फास्ट. पार्ट पळय 4 आनी 5 पळय आसा तो फक्त 3 मिनटांचो. पार्ट 2 भितर हांव कितें बसयता प्रश्न सोंपले म्हगेले. म्हळ्यार म्हाका दिसता प्रश्नांतल्यान कितें सांगपा आसा तें सोंपलें जातलें.
Part 2 हांव बेश्टो वता सर्च फॉर गॉड अबाउट ह्युमन एंडेवर टू फायंड गॉड. कित्याक नाल्यार दत्त मंडलाक बेश्टो आपयलो म्हणून बेश्टे प्रश्न रेज केले आनी वो गेलो म्हणून सदां प्रभाकर तसोच म्हणून सदां फकाण करता सगळ्यांची. म्हणटकीर मातशें एक म्हणजे सिरियस अशें कितें करया नाटक. अर्ली बिगिनींग. Early beginning, what I have read, I come to these conclusions. हांव कितें वाचलां ती नांवां बिवां सांगना तुमकां. नांव खूब सांगना. Just I am coming to broad conclusions. Human endeavor, early beginning. Early beginning, एक भंय, एक नर्वसनेस आनी एक ऑ. आनी ते भंय कित्याक नॅचरल कॅलॅमिटीज, लायफ आफ्टर डेथ, कितें जाता काय मनशाचें. Fertility and crops, early beginnings of human life, hunting stage, city state stage, a mix of fear, nervousness and awe. Uzo, fire, sun, moon, clouds, rain, storm, everything is God. That's the early beginnings, out of fear and ignorance. आणि तेन्ना सगळे लोकांक दिसताले आनी आतां पसून दिसता म्हणजे बिकॉज दीस इज द बिगिनींग, दीस इज द एंड ऑल्सो. आतां म्हणजे हांवें अर्ली बिगिनींग म्हणलें तें बेश्टें म्हणलां. कळ्ळें तुका. बिगिनींग आनी एंड म्हणपा हांवें. फोर्स मॅनेजींग फ्रॉम द टॉप अशें दिसता आमकां देव म्हणटा वयर आसा म्हणून. आनी म्हाकाय तें दिसपाक लागलें. केन्ना जाण तूं प्रत्येक फावट म्हाका दिसता तें वेन आय सी द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंडुलकर. ताका 50 तेन्ना तो बॅट वयर काडटा वयर पळयता बिकॉज फादर एक्सपायर्ड, सो ही इज डेडिकेटिंग इट टू द फादर, टेकिंग इंस्पिरेशन बिकॉज तो ती वयर आसा. बिकॉज ते भुरगेपणाचो आमकां सांगलां की एवरीथिंग इज फ्रॉम द टॉप म्हणून, वयल्यान येता तें सगळें. फोर्स, गॉड इज ए फोर्स मॅनेजिंग फ्रॉम द टॉप. 100 काडले पडटा वयर पळयलो. गॉड आसा फक्त आउट जालो जाल्यार 0 काडून पांया कडेन पळयलें. सो इट इज ए फोर्स मॅनेजिंग फ्रॉम द टॉप. ना सचिन तेंडुलकर जोक सेपरेट केले जाल्यार is a force managing from the top. From hunters to city rulers, priests brought rituals and sacrifices. Priests brought rituals and sacrifices. Because when there were city states, came the priest. Priestaची गरज कितें आशिल्ली? लोकांक जाग्यार दवरपाक जाय. आनी लोक कशे जाग्यार दवरतले? कामगार वर्ग जाय. Priest is nothing but religious labor. King is divine, king is God. प्रिस्तान सांगलें त्या लोकांक king is God. सो देवाले उतर म्हणल्यार राजाले उतर म्हणल्यार देवाले उतर. एंड राजा सांगता ते यू टू ऑबे. सो त्या खातीर लोक काडटाले घाम. आनी आमी पळय आर्किटेक्चर ब्युटीज पळय म्हणटा सगल्यो टेम्पल्स एंड ऑल दॅट. स्लॉक कोणी केला लोकांनी न्ही, तांकां एक पेज बी करून दिली जातली. पूण नांव कोणालें? राजालें. पूण क्राफ्ट्समॅन कोण? लोक. राजान ऑर्डर दिली न्ही ती, किंग इज डिवाइन टू बी ओबेड. आनी अर्ली बिगिनिंग कितें जालें, पीपल यूज टू एड गॉड्स, डिस्कार्ड गॉड्स, रिनोवेट गॉड्स. म्हळ्यार देव जर तर एक तर तूं तर मागता ते तर दिना, देवा मुर्ती ते दे विल टर्न इट इनटू पीसीस आनी ती पुरप ना ती लासप आनी नवो देव तयार करप. Because finally, God is required for hope of favor and benevolence. मागीर आयले ancestor worship as interlocutor with God. Because ancestors मरतकर ते वयर वतात न्ही, मग ते देवा लागीं पावतात. So they can work as arbitrators for us. जसे judges after their retirement they take arbitration. So flowered into now all this has flowered into a big corporate today. So even there it is there today. It's not a beginning. So it's now today it is more systematic, organized, corporate, using all the technology that's available. The fruits of technology are used to spread all this. Then the age of monotheism. Most of our religions are monotheistic. Hinduism, there is a lot of different opinions on that. Though monotheism was attempted to be restored, but because we consider Hinduism, the best way to define Hinduism to avoid any problem is a way of life. काय कटकट ना. म्हळ्यार तूं नमस्कार केल्यार कोता येता, कंद जाल्यार कोता येता.
तूं फूल दिल्यार कोता येता, दिल नाल्यार कोता येता. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? इट्स अ वे ऑफ लायफ म्हणपाचें. सो फायन. So monotheism is the belief is in one supreme being. Belief is in one supreme, but minor gods are many. Many. In all religions, superstition, worship and rituals to please, आमी कितें म्हणटा, देव is one supreme being, but I have so far not heard or seen any temple of supreme being. हांवें minor godsachis temple पळयला. Temple or churches or whatever it is. And we say there is one supreme being who is the creator and omnipotent. Now, search for God has been taken through many ways. This is the Jainism way. They have no concern for God. Ataniya, everything has become nice. Matlab, कितें जाला? Equal झाला, equal. Equality is restored. A difference काय ना. Just as your shampoos, face powder, shaving creams, त्या भशेन ते. म्हणटकीर सगळे shampoos एकच तरेचे ते. Little content is different. Or soap. थोडे मागीर Dove आसतले, थोडे मागीर Hammam आसतले. So but earlier in the original side, there was no concern for God, because the person who propagated it said there is no creation by external force. Nobody has created the universe. You can't say God has created the universe, because God whom you are talking is non-creative. In the example that one of the example that he gives is, he says water cools and fire burns. If God is creative, can he reverse it? See, God is non-creative according to this particular following. But the earlier following was that God is omnipotent. But there is another train of thought that God is non-creative and there should not be any concern for God. The Buddhist way, omnipotence doubted. See, this is another stream of thinking to reach God. Perfect God questioned. In fact, in Buddhist teaching, what they say is, there is sorrow, there is calamity, there is love, there is hate. Things are pure, things are impure. Then how can you say God is perfect? If it is perfect, how there is pure and impure? How there is love and hate? There should be love only. So God is not perfect. He questions that the thesis that God is perfect. Priests as culprits. The Buddhism way is focus on contentment and peace. And why you should offer to God, they say. We should submit to God. We should not offer to God. And why we are adoring multiple gods? The question is was Buddha an atheist? I have no fixed answer on that, neither I want to give an answer. But Mahatma Gandhi interfered everywhere. And in his books he has argued that Buddha cannot be called as an atheist. He was a believer. Though Buddha himself may know that he is an atheist. That's okay. Because of this Jainism and Buddhism onslaught came the Shankaracharya, where again he brought the concept of Brahma as supreme God, universe as an illusion, and God is real, one supreme being. Idols are only symbols. And the liberal thought was arrested actually. A little word about Islamic, that God is the Lord and Creator, so worship Him, and the Sufi tradition of meditation and introspection. The Son of God, Jesus Christ, the message of love. In fact, the message of love I muddam galam. Kiyan nala maka bhalyan bi marat mun lok. No, but that's a fact also, because he brought the message of love. But the all-powerful church. And in the beginning, it was by sword and torture. Priests and monks were butchered. Protestants used to butcher the Catholics, and the Catholics used to butcher the Protestants. Corruption institutionalized. And our omnipotent God was a spectator. China and Japan. I'm just mentioning all this, इतलेच खातीर की वेगळे thought processes वेगळे कडेन आसात म्हणून. Yes, I mean, just to put that point across.
little recognition of God in China and Japan. For them, life after death is a speculation. There is no creator, no soul. In fact, the guitar is not fully atheistic, but there are strings of atheism in the guitar of China and Japan. And organized by religion and God ampai uleita, that is one side, and it little less organized. Less organized. Like you got FDI. FDI ni foreign domestic investment ni. Direct retail किती उपाशील ते? FDI and retail. Retail. FDI and retail पे वळी कंपनी पे येतात. त्या भशेन आमगेली ऑर्गनायझड रिलीजन. आणि मागे आमगेले पे भाजीपालो बी घेऊन पे बसतात ग्रोसरी मर्चंट्स बी गाड्यार बिड्यार कितें म्हणटा आमी किराणा टाइप ऑफ शॉप्स तशे खूब आयले in addressing the issue of God. Followed, no? And one was Kabir. But I don't know whether there are any takers for this formless, simple way to attain God. I'm not reading that. You can read it. Because tu वास्तकर बर दिसता. म्हाका न्ही तुमकां बर दिसतलें. पण म्हाकडे हांगा येवन कितें मेळ्ळें काय म्हणल्यार एटलिस्ट हें मेळ्ळें की आय एम नायदर इन टेम्पल नॉर इन मॉस्क म्हणून. I am neither in Kabba nor at Kailas. I am near to you, and yet you are climbing the palm tree to seek me. Well, what thought घेऊन मुखार वचपी आमचे कडेन ऑर्गनायज्ड रिलीजनाक म्हाका दिसना दिसता अशें. But this is another thought of my hypothesis: God never dies. And Magir, there is nothing which Gandhi has left untouched. भयंकर मला इतलेच खातीर सांगता हांव की he said truth is God. आणि ताजें एक कारण अशें he had many friends who were with him who were atheists. आणि तो तांकां God fearing म्हणटालो गॉड फियरिंग तांकां राग येवप बिकॉज वी आर एथेइस्ट तूं आमकां गॉड फियरिंग कशें म्हणटा म्हणजे गांधीन डेफिनेशनच चेंज केलें देवाचें ट्रूथ इज गॉड यू आर ट्रूथ फियरिंग नॉट गॉड फियरिंग सो एथेइस्ट आर ट्रूथ फियरिंग सो ट्रूथ इज गॉड इज ट्रूथ एथिक्स लव मोरॅलिटी फियरलेसनेस कॉन्शियन्स he is in none of the things we worship. He is elusive. And what a dangerous statement केला जाणे. God permits the atheist to live म्हणून. No, this is how he was looking at things. Over. आणि फक्त 4 मिनिटां पार्ट 3 आणि मागीर बाकीचे 2 मिनिटां. This is God exists or God doesn't exist. Exists or doesn't exist. That's the question there. See, that girl is working on that. She'll get an answer. Does God exist? My answer is given below. If you ask me this question, my answer I have given below. You cannot dislodge God. That doesn't mean God exists. No. You cannot dislodge him. This is like our MOI controversy. Similarity is you cannot dislodge the grants to all languages, but I believe mother tongue is good for primary level. Yeah. Does God exist? I'm not saying it exists, but I'm saying you can't dislodge God. You can't dislodge grants. But mother tongue is the best for primary level. So, now why you cannot dislodge God? I found these answers in the God Delusion by Richard Dawkins. He has given much more than this. He said you can't dislodge God because of all these factors which are weighing on the minds of people. See, universe moves, nature moves. So who is moving it? God. There's a design in nature. Who has given that design? God. Great people say that God exists. Great people believe in God. Newton,
Einstein, Galileo, Darwin. Darwin gave his theory of evolution, but he submitted to Christianity. See, that was actually out of fear. That's a different story altogether. ते आता काबार करपा उठिल्ले because God is all powerful. फॉरगान न्ही आमचे वचन न्ही. Tagore, Gandhi, great people. ती नाव घेवपा नाका, that becomes ancestor worship. Dr. Mashelkar, for instance. Dr. Mashelkar पसून बिलीव करता, तूं अशें म्हणटा, तूं ताज्या काय व्हड. You cannot dislodge God. Great people. आणि चड अशें पळयलें तुमी गोंयांत जाल्यार खंयचे कडेन आतां आमी पळय चर्चीस बी पळय म्हणटात आनी गांवां चर्चीस पळयात आनी चड पयसो रिनोवेशनां बी खंयच्यान येता फ्रॉम नॉन रेजिडेंट गोवन्स एंड ओवरसीज गोवन्स. कित्याक तांकां एक गिल्ट फिलींग आसता की आमी गोंय सोडलां आनी आमचो कल्चर आमी पसून पयस आहा तो राखून आमी दवरपाक जाय. आमी थंय रावपाचे पूण राखून दवरपाचो तो. कित्याक आमी केन्ना डिसेंबरान बी येतली न्ही हांगा 5 दिसां खातीर म्हणजे चड पयस थंयच्यान येता. तसोच विश्व हिंदू परिशद असल्यो गोश्टी पळयात तांकां भायल्यान पयस चड येता बिकॉज हिंदू सेटल्ड इन कॅनडा ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल. ते फील अरे कितें चल्लां हांगची लायफ पळय भुरग्यां बी तांकां पळयता तांकां सामकी राग मारता तांकां भुरग्यां पळय अरे ते कल्चरा पसून पयस सरता आमची भाशा येना आमची सॉंग्स येना तांकां देवा विशीं तांकां कांय येना सो आमी पयस थंय पूण धाडया सो दॅट गिल्ट प्लस मनी इक्वल्स sin is removed, we are at peace. So पयस थंयच्यान थंय जड येता. ग्रेट पीपल. सो मागीर आमी कितें म्हणटात पळय ते पसून पयशे धाडटात आनी तुमकां पयशे दिवपा इगर्जी कितें जाता लायक दॅट. सो ग्रेट पीपल. टिचर्स ग्रेट पीपल अगेन. पेरंट्स ग्रेट पीपल. फियर तरे फियर. Mortality. Human life is mortal. Plant life is mortal. So that means there is somebody who is immortal and that's God. Blackmail. God loves you, so you can't say you don't love God. Even if you don't love God, still God loves you, Baba, so please love God. That's blackmail. Non-believers. पळया नॉन बिलिवर्साचे संख्या वाडटली आणि नॉन बिलिवर्सा संख्या वाडप म्हणल्यार कितें इविल शक्ती वाडटली. द डेव्हिल विल ओवरपावर बिकॉज नॉन बिलिवर म्हणल्यार यू आर डेव्हिल. सो द फियर ऑफ नॉन बिलिवर्स. सो आमची संख्या वाडोवपाक जाय. सी बाकीची धर्माची लोकांची संख्या वाडटा सो आमगेली वाडोवपा जाय ते भशेन नॉन बिलिवर्स. नाल्यार आमकां ते ओवरपावर करतले. आनी थोड्या तेंपान तुमकां खबर आसा हिंदू विल बी इन मायनॉरिटी बिकॉज विल बी टेकन ओवर बाय मुस्लिम्स एंड कॅथलिक्स. No, this is not a fact. I mean, I'm just saying it in a sarcastic way. Heads and tails. म्हणल्यार कितें आहा आसल्यार पावलो ना जाल्यार कितें जावपा आवडलें. आणि मेजर थिंग म्हणजे इनकम्प्लीट इव्हेंट्स जे संवसारा पळय इव्हेंट्स पळय जाता ते इनकम्प्लीट उरतात आनी ताका लागून ते देव संकल्पना तूं तातूंत भितर चड पडटा. इनकम्प्लीट इव्हेंट्स म्हणल्यार कितें आतां हांव हांगा टॉक दिता म्हाका हांगा हड्ड्यान दुखपा लागलें दुखना हांव भिनाका देव कसो पावलो दोतोर मुकूल जाय तुका सांग प्रॉब्लेम ना रोखडो व्हेलो म्हाका हॉस्पिटलान टक 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 केलें. पयलीं बरें देव ना म्हणटाले तूं देव पावलो तो ना जाल्यार तूं हांगा खलास जावपाचो. एअर क्रॅश जाता सगळे लोक मरतात 2 जाण वाचतात देवान तांकां वाटायले आनी बाकीच्या देवान कितें केलें तरी ते विचार करप ना पण वाटायले तांकां विचार करप. सो इनकम्प्लीट इव्हेंट्स पळय आसतात ताका लागून आतां पळया आतांच जर हांव इतलें उलयलो हांव एक्चुअली खऱ्यांनी सांगता हांव देवाचे कोंत्र उलयलो ना. देवाचे कोंत्र हांव उलोवपाक कोण हांव सामको ल्हान मनीस. पूण सपोज म्हाका म्हणून आतां वता तेन्ना एक एक्सिडेंट जालो पयलीं मेरेन देवा रोखडें शिकयलें पूण देवान ताका वाटायलो म्हणल्यार ताका कांयच जालें ना. फक्त तागेले पांय फ्रॅक्चर जाला आनी कांयच जालें ना. तकले मार बसलो ना ताज्या तकली सांबाळली देवान. सो इनकम्प्लीट इव्हेंट कंप्लीट जाल्ले पूण हुस्को मोकळो. पूण इनकम्प्लीट इव्हेंट्स क्रिएट प्रॉब्लेम
For these, you can't dislodge God. Okay. I would request you to read this book by Arun Shourie. Arun Shourie बरेल म्हणून वाचपाचो. तो खूप सुदारला पयलींच्या काय. पयले तागे book आशिल्लो Worshipping False Gods. But that was on Dr. Ambedkar and all. What a book is, he is rejecting God. He says, how can extreme suffering be commonplace if there is God? Just get out of the train in Mumbai and you know what is extreme suffering. It is common. Non-suffering is uncommon. Then how can there be God and how can you explain it when suffering is commonplace? Suffering refutes God and religion. That is the thesis to Atum Anta. Does he know the heart of a mother? So Boba any talker, so book wasatu. And I said God exists and you cannot dislodge God. So I have to give you another story also. दोन्ही स्टोरी दिता इतल्यान म्हगेले पार्ट 3 सोंपले. पार्ट 4 फक्त 2 मिनटाचो. 2 मिनटां. Another story is, who created him? God created man, woman and the universe. आता हांवें ह्या भुरग्यांक वचून शिकोवप God created man, woman and the universe म्हणून. आमी शिकयतात न्ही हेच. Who created him? म्हळ्यार कितें आन्सर दिवपाचो ते विचारप ना. इतलू शाणू जायनाका. इतलू शाणू जायनाका. But if he created everything, then can he uncreate? If I create, I should be in a position to uncreate it. I have created this. Can I uncreate it? Then why are we begging instead of praying? 98% people say they pray, but they beg actually. Truth does not require brains. Actually, God does not exist. It doesn't require brains to say this. To say God exists, it requires brains. Because you have to argue. Argue कितें? Scriptures आसात ते कितें फकाणां? इतली बरोवन दवरते पयलीं साकून लोकांनी ती फकाणां. आनी इतले आमी रिच्युअल्स करतात ती फकाणां. मिरेकल्स जाता ती फकाणां. कितली मिरेकल्स जाता, मिलाग्री जाता पळय. तो चलपाक शकनाशिल्लो आनीक 5 दिसांनी तो चलपाक लागलो पळय. ताका कॅन्सर जाल्लो म्हूण डॉक्टरान सांगिल्लें. हे अमकें कितें केलें, कॅन्सर गेलो. Maybe 1 case in lakh cases. You know, 1 minus lakh died because of cancer. And ताका कधी कॅन्सर जाल्लो नाशिल्लो जातलो. Anyway, let's not go into that. What I'm saying is, truth does not require brains. If something doesn't exist, God doesn't exist. It's truth. म्हळ्यार कितें म्हाका सदां सॅटर्डेची याद कित्याक जाणू फाल्यां सॅटर्डे म्हणून. एक फावट आमी सॅटर्डे बसतात म्हळ्यार विचार करपाक हांव आनी कितें दिसत तुमकां. बार जातात. घरा कडेन सगळी सामकी अशी धारगडो अशी आसता न्ही. सो भितर सरता तेन्नाच यू हॅव टू टेल लायज. इट रिक्वायर्स ब्रेन्स. 25 लोक आशिल्ले ते अशी उलोवपाक लागले पाड पडून तांचे नाग जालची दुसरे कडेन वचना. कळ्ळें कितें लायक दॅट. जीव खालो म्हजो. It requires brains to tell lies. To tell the truth, you don't require brains. It is clear. God does not exist. It's clear actually. But God exists. Then I have to support with lot of brainy stuff and lies. Good deeds, compassion and love needs no sanction from God. Neither credit points to enter heaven or hell. Good deeds, compassion payasa. It is not like a ladies compartment in the train which is available only for females. Males cannot enter. Ladies compartment in the train, males cannot enter. But for compassion and good deeds, even if you are not a believer, it's possible for you. Evidence of death after birth is foolproof. No evidence of rebirth or life after death. I have not found any. Death is a full stop. And एक भय असते कितें आमकां, overcoming fear of death.
म्हणून गॉड. बट ओव्हरकमिंग फिअर ऑफ डेथ इज व्हेरी व्हेरी इझी, व्हेरी इझी. हो फॉर्म्युला खुशवंत सिंगान दिला, तागेलें पुस्तक वाचला हांवें. तो म्हणटा कितें, ओव्हरकमिंग फिअर ऑफ डेथ इज व्हेरी इझी. Attend each and every funeral. Very easy, yeah. It is just, you just get over it. That you will one day die. And then if you have fear, actually do it. It works. It has worked with me. If God is one, what is the relevance of multiple religions? And now, since you are tired, I will show you a video clip and then I will close. ना उम्र का लिहाज, ना महिलाओं का ख्याल, भक्तों की आस्था पर गहरी चोट. राजा के घर भक्तों से धक्का मुक्की. बप्पा के दरबार में ये कैसा सलूक? जी हां, कैमरों में कैद तस्वीरें गवाही दे रही हैं. मुंबई के गणपति उत्सव में बदइंतजामी की पोल खोल रही है. मंडल के कार्यकर्ताओं को ना तो उम्र का लिहाज है, ना महिलाओं का ख्याल. देखिए कैसे महिलाओं को धक्के मार रहे हैं गणपति मंडल के कार्यकर्ता. कैसे भीड़ के बहाने गजानन के भक्तों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचा रहे हैं मंडल की ओर से तैनात ये लोग. क्यों हो रही है भक्तों के साथ ये बदसलूकी? कहां है इतनी बदइंतजामी? बताएंगे आपको. आप बने रहिए हमारे साथ. लालबाग के राजा के दर्शन के लिए घंटों के इंतजार के बाद जब भक्त उनके करीब पहुंचते हैं तो उनके साथ होने वाले सलूक मंडल के इंतजामों की पोल खोलने के लिए काफी है. लाखों भक्त के साथ मंडल के कार्यकर्ता खुलेआम बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं. देखा आपने, गणपति की विशाल मूर्ति के सामने खड़ा ये कार्यकर्ता कैसे भक्तों को धक्के मार रहा है. भक्तों को जबरन गणपति की मूर्ति के सामने से हटा रहा है. ये सलूक किसी एक भक्त के साथ नहीं हो रहा. एक बार फिर देखिए बप्पा के दरबार में बदसलूकी की ये तस्वीरें. कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा के गणपति पंडाल की, जहां अपने बप्पा की एक झलक पाने के लिए भक्तों को कई कई घंटों तक कतार में खड़ा होना पड़ता है. कई किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय कर पहुंचते हैं भक्त. लेकिन इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब दर्शन की उनकी बारी आती है तो न ही उन्हें बप्पा के ढंग से दर्शन हो पाते हैं और न ही गणपति के पांव छूकर आशीर्वाद ही ले पाते हैं. देश भर में मशहूर लालबाग के राजा की सेवा में खड़े इन कार्यकर्ताओं को न तो भक्तों की उम्र का लिहाज है, न ही महिलाओं का ख्याल. देखिए कैसे ये कार्यकर्ता इन महिलाओं को खींच खींच कर बप्पा के सामने से हटा रहा है. अब जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे इस बुजुर्ग भक्त को धक्का दे रहे हैं मंडल के कार्यकर्ता. बच्चों तक को नहीं बख्श रहे मंडल के ये कार्यकर्ता. ऐसा नहीं है कि दूर दराज से आने वाले आम भक्तों के साथ ही ऐसा हो रहा है, बल्कि खुद महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी मंडल के कार्यकर्ताओं की इस बदसलूकी का शिकार हैं. लालबाग के राजा को मन्नतों का गणपति कहा जाता है. मान्यता है कि अपने दरबार में आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं राजा. लेकिन कार्यकर्ताओं के ऐसे सलूक से तो गणपति के दर्शन की भक्तों की पहली मुराद ही पूरी नहीं होती दिखती.
सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और ऐसा नहीं है कि लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों के साथ बदसलूकी का ये कोई पहला मामला हो। इससे पहले भी गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं की बदसलूकी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल ही पंडाल के कार्यकर्ता ने एक भक्त को थप्पड़ मार दिया था। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बप्पा के दरबार में कैसे लोगों के आस्था के साथ मजाक किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब लालबाग के राजा के दरबार में ऐसी हरकत हो रही हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और एक वहां के आयोजक जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं, उन्होंने एक दर्शन करने आए थे लोग, उसको चाटा जड़ दिया था। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी जुड़ चुके हैं। अंकुर, जो तस्वीरें हमने देखी, जो लोग दर्शन करने आए हैं बप्पा के, माना जाता है कि लालबाग के राजा के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। और जो तस्वीरें हमने देखी तो लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उनकी आस्था के साथ मजाक हो रहा है यहाँ पे? और ऐसी तस्वीरें देखने के बाद शायद वो दर्शन उसके बाद सिर्फ टीवी में ही करना पसंद करें। और इंतजामों की पोल भी खोल रही है तस्वीरें। देखिए, इसके अंदर दो तस्वीरें पेश होती हैं। पहली तस्वीर इस बात की है कि लालबाग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका अपना एक इसमें तथ्य है, अपने दावे हैं। उनका कहना है कि उनके यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा आती है कि उसको कंट्रोल करना वो उनके बस में नहीं रहता। इसके अंदर उनके वॉलंटियर्स होते हैं, उस पूरे इलाके की रैपिड एक्शन फोर्स की पुलिस होती है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स होती है, मुंबई पुलिस उसमें लगी होती है, लोकल थाना उसके अंदर लगा होता है। और इतने लोगों के होने के बावजूद उनका ये दावा है कि इतना क्राउड आता है, वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं भक्तों के हिसाब से बात करूं, आप सिर्फ मुंबई के छोड़ दीजिए, मुंबई के अलावा पूरे देश से लोग स्पेशली अपना प्रोग्राम शेड्यूल करते हैं पर्टिकुलर 11 दिनों के लिए कि अगर उनको लालबाग के दर्शन करने को मिल जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में सबके लिए निराशा वाली बात होगी। लालबाग के राजा को मन्नतों वाला राजा भी कहा जाता है। मुंबई में हजारों गणपति पंडाल सजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ लालबाग के राजा के दरबार में ही क्यों होती है? क्या है दरबार की मान्यता? देखिए इस रिपोर्ट में। लालबाग के राजा, मन्नतों के गणपति, मुरादों के बप्पा, मुंबई ही नहीं बल्कि देश भर में मन्नतों के गणपति के नाम से मशहूर हैं लालबाग के राजा। भक्तों के लिए मुरादों के बप्पा हैं लालबाग के राजा। कहा जाता है कि अपने दरबार में आने वाले भक्तों को निराश नहीं करते हैं लालबाग के राजा। हर भक्त की मुराद पूरी होती है, जो मांगते हैं मिलता है। बड़ौदा से हम लोग आए और यहाँ पे ऐसी मानता है कि यहाँ जो भी आते हो इच्छा पूरी होती। हमने लालबाग में जब से आने चालू किया, जो भी मांगा हमको सब कुछ मिल गया, सब अच्छा ही हुआ है हमारा। यही श्रद्धा और विश्वास भक्तों को लालबाग के राजा के दर्शनों के लिए खींच लाता है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए मुंबई और महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि देश विदेश से हजारों लाखों भक्त आते हैं। बप्पा की एक झलक पाने के लिए 12 से 15 घंटे कतार में खड़े होकर इंतजार करते हैं। कई बार तो ये इंतजार 24 घंटों तक पहुंच जाता है। 5-5 किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है। लेकिन उम्र और कष्टों से बेपरवाह भक्तों की चाहत बस इतनी होती है कि किसी तरह लालबाग के राजा के दर्शन हो जाएं, उनके चरणों में मत्था टेक लें। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस लालबाग के राजा के दर्शन के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों भक्त आते हैं, जिन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। आखिर बप्पा के इस दरबार की शुरुआत कैसे हुई? क्या है लालबाग के राजा की कहानी? देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें लालबाग के राजा की सालों पुरानी तब की झलक दिखाती हैं, जब लालबाग के राजा आज की तरह मशहूर नहीं थे। ये मंडल जो पहले सार्वजनिक मंडल के नाम से जाना जाता था, ऐसे समय में बना जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। गणेश मंडल की स्थापना से 2 साल पहले साल 1932 में यहाँ के स्थानीय मछुआरों का बाजार जमीन विवाद के चलते बंद हो गया था। इसी वक्त लालबाग के मछुआरों ने अपने आराध्य देवता गणपति बप्पा से मन्नत मांगी और 1934 में मछुआरों को मछली बाजार के लिए अलग से जगह मिल गई और जगह भी काफी बड़ी और अच्छी थी। अपनी मन्नत पूरी होते ही मछुआरों ने यहाँ गणेश मूर्ति की स्थापना की।
जिसकी परंपरा 80 साल से बरकरार है, जिसे आज मन्नत का राजा और लाल बाग का राजा कहा जाता है। 1934 में जो शुरुआत ही हो गई, तो ये गणपति मन्नत के रूप से इसकी शुरुआत हो गई। सामाजिक संगठन करते करते बुजुर्ग लोग रहे, इसमें बहुत सारा अपना काम करके, अपना घर का वक्त देके ये सब मंडल बना किया। वक्त के साथ न सिर्फ लाल बाग के राजा की मूर्ति में बदलाव आया, बल्कि इनकी लोकप्रियता भी आसमान छूने लगी। 18 फुट के लाल बाग के राजा अपने सिंहासन पर एक विराट प्रतिमा में बैठने लगे और इनके दरबार में क्या नेता और क्या अभिनेता सभी सिर झुकाने के लिए आने लगे। लालबाग का राजा मुंबई और मुंबईकरों को बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। हर साल लाखों के तादाद में लोग यहाँ आते हैं और उसका दर्शन लेते हैं। कहा जाता है कि राजा उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी उसकी प्रजा, और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या ही लालबाग के राजा को असली मायने में राजा साबित करती है। राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। हे मुद्दाम घेतला हांवें, बडे अभिमानान घेतला। भगत सिंग कित्याक भगत सिंग म्हणतो आयडल न्ही आमचो। ताची पुस्तक वाय आय एम एन एथिस्ट, आनी इतले खातीर घेतला की एज ग्रुप ऑफ 20 to 35 should read it, and these are his last sentences in the book. की ताका कोणें म्हणलें, when your last day comes, you will begin to believe. आता you are not believing in God, no? जेन्ना तुमची निमाणसो वेळ येतलो, then you will start believing. ताका ताणें आन्सर दिलो. And you cannot question Bhagat Singh on his patriotism and on his bhakti for the desh. Desh म्हणल्यार country. Can you question? No, you can't question. Correct. तेरे खातीर मुद्दम घेतला. म्हळ्यार बाकीचे एखादी सेक्युलर स्युडो काँग्रेसमॅन जायत, वो न्ही, वो स्युडो न्ही. भगत सिंग इज नॉट ए स्युडो. प्रभाकर तिमले मे बी स्युडो इंटेलेक्चुअल, स्युडो एज्युकेशनिस्ट. Bhagat Singh is not a pseudo. Yeah. The last part. Okay, fifth is only one slide. This is the last part. 3 minutes. आता हे इतली बोलून 3 मिनिटं घेता का? Now, what I have got to say? Self-introspection. When I look at myself, what I have got to say about me? First thing I will tell you is read this book. Read this book. It's a good book. Because it is about God. Okay. It is about the absence of God. What's it? And in my journey, I am moving like this. Religion, less of it, nothing of it. I have not reached nothing of it. Means, if I want, I can reach it right now. But I am just not trying to reach it. I am balancing certain things. Finally, you are living in a society. You have to balance. थोड़ी decency and etiquette सांभाळपा जाय न्ही. पण ते भितरल्यान न्ही, मनांतल्यान काय ना. मनांतल्यान केन्ना सोंपलें. This is my journey. Religion, less of it, nothing of it. The journey continues. God, God, God and God. ल्हान आसतना हांव आज्या बरोबर फातोडेचेर फुलां हाडपा वतालो. तो बडी घेवन वतालो आनी फाटल्यान हांव. आनी तो म्हगे बापाक बी सांगतालो, पळय येदो असो पोर पूण कितली देवास म्हण ताका. तागेर कितें शिका म्हण तुमी. आनी ताचे बरोबर सायडीक बसप, संधी म्हण करपाक. God, God, God. Less and less of God. No God, finally. Yes.
So these are some of the principles. Finally, what happens, महेंद्र काकूल ना नाल्यार ताका संवय म्हाका विचारपाची, तूं इतली उलयलो तिमल्या निमाण तूं कितें सांगपाक सोदता तें सांग आनी वडय मरे म्हणून सोंपय तें ना तो खंय गेलो तो हय ताजे खातीर स्लायड केल्या हांवें. But he's benefiting all of us because of him, but he is not there. देवान वेल ताका वेल म्हणल्यार कामा वेला आनी तुमी सगळे देवा कृपेन सांग पावले पळय. देवा कृपेन वाटेर बी वायट कांय जालें ना, कृपेन पावले. So finally what I want to derive is this, after all this talk, this is supposed to be the last slide, supposed to be another just half slide more. Not on this, yeah. If you ask me, open to all religions, addicted to none. Reason supersedes belief in God. Place of tradition, rituals and archives. Love and rejoice festivals without beliefs attached. खूप जण म्हाका म्हणटात तूं थी कित्याक वता रे, हें कित्याक करता रे, तें कित्याक करता रे. Love and enjoy festivals. I don't believe in them. I consider it as a festival. And religious faith केन्नाय चुकून जर अशी उचकी बी येना तशी येवपाक लागली, सामकी प्रायव्हेट अफेअर तेच मिनटा खातीर दवरपाची. पेरेरा म्हणटा तो फक्त नेगेटिव्हिटी येत जाल्यार, नाल्यार ना. आय एम बॉर्न टू हिंदू पेरेंट्स बट आय एम फ्री फ्रॉम रिलीजन. नो हेवन, नो हेल, नो सोल, आयदर प्री बर्थ और पोस्ट डेथ. And according to me, God has no alternative except to accept the laws of universe. There is no alternative. He is not the creator. Even if he is, he has to just accept the universe and say, Tatastu. आपण काय करपा शकना. This is the reading that I did. And as I told you, this is the last slide. And with this, we end.
जाए तेरी दया जिस पर हो जाए, बन जाए उसके बिगड़े सारे काम। तेरी दया जिस पर हो जाए, तेरी दया जिस पर हो जाए, बन जाए उसके बिगड़े सारे काम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर